डिप्रेशन क्यों होता है लोगों को? यू माइट बी फीलिंग बैड अबाउट यार वाई एम फीलिंग, वाई आई डोंट हैव एनर्जी, लेट्स सपोज मेरे सारे दोस्त जो है ना वो इधर उछलते कूदते फिर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, और मैं जो हूँ बैठा हूँ इधर मुंह बना के. तो ऑफ कोर्स people around you might not be able to understand, but more important than that is, are you yourself able to understand and justify? So yeah, this is the very important thing in this whole dynamics, कि आप अगर खुद से ही अपने आप को गैस लाइट कर रहे हैं, इफ़ यू आर बीइंग क्रिटिकल अबाउट कि यार मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों है, तो फिर तो आप कुछ भी करते रहें, दैट शैडो कंटेंट इज गोइंग टू रिमेन देयर एंड कीप ऑन haunting you for the rest of your life. So for example, if you don't have any energy, that is very much possible because you have been suppressing a particular emotion for a very long time. Emotion को suppress करने में energy लगती है. Alright, and because you have been suppressing that emotion, all of your energy has been drained out in that process of suppression, and you're not left with anything else. If you're constantly at war with your own self, Gabor Mate कह रहा है कि this is one of the biggest cause of stress. If you're constantly suppressing yourself, or the perception in your mind is कि अगर if I'm going to express this particular part of my being, तो फिर कोई ना कोई problem होगी. ठीक है, तो you are at a antagonistic relationship with your own being. So in other words, a part of your own being makes you feel scared of your own self. So your own being is enough to generate this fight and flight response. Fight and flight response is actually a stress response, और stress is a physiological process. Means कि body के अंदर कुछ हार्मोन्स जनरेट होते हैं जो आपको अटैक मोड में लेकर आते हैं. या तो आप भागते हो वहाँ से सिचुएशन से फ्लाइट मोड, या फिर यू अटैक द पर्सन और द थ्रेट दैट इज देयर. ठीक है, एंड दैट रिक्वायर लॉट्स ऑफ एनर्जी, or that energy is generated through these hormones which are known as cortisols, and there are few more. ठीक है, अब cortisol अगर आपकी बॉडी के अंदर रह रहा है मुसलसल, if it is in your blood constantly, it destroys your immune system, it creates inflammation in your body, and inflammation is also a cause of depression. अगर आप कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी, इफ यू लेट्स सपोज फीलिंग डिप्रेस, और कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन अगर आप खाएं, you start feeling better immediately. Within like 2-3 घंटे के अंदर जो है ना आपको बिल्कुल सारी एनर्जी आपको लगता है कि वापस आ गई. तो the stress causes inflammation, and inflammation eventually causes depression subsequently. सही है, अब आप इसके ऊपर अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो it's not going to, you're just adding salt to your own wounds, your own self. The question is, are you coming for your own rescue or not? If you want to come for your own rescue, उसका सबसे important जो aspect है, you start respecting your own reactions, respecting your own behavior, and justifying कि हाँ भी there is a very good reason why I am doing this. शेरिल पॉल की जो किताब है उसका टाइटल है Wisdom of Anxiety. The Gabor Mate की डॉक्यूमेंट्री उसका भी टाइटल ऐसे ही है, The Wisdom of Trauma. And what he's saying कि if you have these things, so this is a very good window for you, a kind of a pointer for you to actually start looking inside your own self. ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा introspection करते 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 you can actually get to the actual cause of that particular behavior. So essentially, either you have not been able to complete a grief cycle of an event that happened in the past, or you might not have been able to complete a stress cycle of an event which happened in the past. ठीक है, अगर जो भी difficult experience आपको होता है, for example, अभी आपका एग्ज़ाम है कोई, और एग्ज़ाम ऐसा है कि जो आप आफ्टर गेटिंग क्वेश्चन शीट आपके हाथ में आने के बाद यू रियलाइज़ कि यार आई कैन नॉट डू मोस्ट ऑफ इट, दिस वेरी स्ट्रेसफुल इंसिडेंट. तो अब दिस इज जनरेटिंग अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन योर बॉडी. स्ट्रेस रिस्पॉन्स का मतलब ये कि इफ़ योर बॉडी इज गोइंग इनटू स्ट्रेस, देन इट शुड ऑल्सो कम आउट. इफ नॉट गोइंग टू कम आउट, तो फिर वो जो डिसरेगुलेटेड स्टेट है आपके इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम की, दैट इज गोइंग टू eventually. So after every stressful event, you should be able to complete a stress response, and after every sad incident, you should be able to complete a grieving response. And if you're not giving yourself space for these two things, then your mental, your emotional health is just a ticking time bomb.